बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए while formulating extension education. Four main elements can be identified within the process of extension. जो process हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके बाद कौन से वो चार एलिमेंट्स हैं? नंबर 1 नॉलेज एंड स्किल, नंबर 2 टेक्निकल एडवाइस, नंबर 3 इंफॉर्मेशन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड नंबर 4 मोटिवेशन एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इन चारों को आज के लेक्चर में हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है नॉलेज एंड स्किल्स। Although farmers already have a lot of knowledge about the environment and their farming system, extension can bring them more other knowledge and information which they do not have. The transfer of knowledge and skills to farmers and their families is an important extension activity, and the extension agent must prepare himself thoroughly. He must find out which skills or areas of knowledge are lacking among the farmer in his area and then arrange suitable learning experiences through which the farmer can acquire them. So जो भी ये एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है उसका काम सबसे पहले ये है कि वो ये देखे कि फार्मर्स जो हैं वो कौन सी स्किल में एजुकेशन में लैक कर रहे हैं और जिस चीज़ में वो लैक कर रहे हैं उसके मुताबिक उनके लिए प्रोग्राम को डिज़ाइन करें. Technical advice and information. Extension also provide advice and information to assist farmer in making decision and generally enable them to take action. This can be information about price and market, for example, about the availability of credits and inputs. The technical advice will probably apply more directly to the production activities of the family farm and to action needed to improve or sustain the production. तो यहाँ पे जो है एक्सटेंशन एजुकेटर जो है वो टेक्निकल एडवाइस प्रोवाइड करता है फार्मर्स को या कम्युनिटी के लोगों को कि वो किस तरह जो प्राइस के बारे में पता कर सकते हैं, मार्केट के बारे में पता कर सकते हैं. Much of this technical advice will be based on the findings of the agricultural research. In many instances, however, farmers are also sources of valuable advice and information for other farmers, and agents should always try to establish a farmer to farmer link. Next is farmer organizations. As well as knowledge, information, and technical advice, farmers also need some form of organization, both to represent their interests and to give them as a mean for taking collective action. क्यों उनको ऑर्गेनाइज करना जरूरी है? ताकि वो collective action ले सकें किसी चीज के बारे में. Extension therefore should be concerned with helping to set up, structure, and develop organizations of local farmers. This should be a joint venture, and any such organization should only be set up in consultation with the farmers. Motivation and self-confidence. One of the main constraints to development that many farmers face isolation and a feeling that there is a little they can do to change their life. ये जो lack of motivation है ना, ये बहुत बहुत नुकसानदेह साबित होता है. जो लोग ये समझते हैं हम कुछ नहीं कर सकते या हम अपनी जिंदगियों को चेंज नहीं कर सकते, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते. तो एक्सटेंशन एजुकेटर का ये भी काम है कि उनके अंदर मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें कि आप काम कर सकते हैं. जो 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 वर्ड है ना, वी कैन डू इट, कि हम कर सकते हैं, आई कैन डू इट, ये क्रिस्मेटिक वर्ड है, ये आपके अंदर अंदर एनर्जी पैदा करता है. तो एक्सटेंशन एजुकेटर जो है वो फार्मर्स के अंदर ये कॉन्फिडेंस पैदा करता है, उनको मोटिवेट करता है कि वो अपनी जिंदगियों को, अपनी लाइफ्स को खुद चेंज करके बेहतर बना सकते हैं. Some farmers will have spent all their lives struggling in difficult circumstances to provide for their families with a little support or encouragement. So motivation और self confidence बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि extension education provide करती है. It is important for extension to work closely with farmer, helping them to take the initiative and generally encouraging them to become involved in extension activities. Equally important is to convince farmers that they can do things for themselves, that they can make decision and they have the ability to break out their poverty. तो ये उनके अंदर
इनके अंदर मोटिवेशन पैदा करनी है कि वो अपनी पॉवर्टी का जो सर्कल है उसको ब्रेक कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगियों को बेहतर कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। तो एक्सटेंशन एजुकेशन जो है यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। It is not suggested that all extension activities must contain each of these elements, nor that some are more important than others. Clearly, the extension approach will be determined by the particular circumstances. However, an overall extension services should be based on these elements and should seek to promote them within the rural areas. Sometimes the local farmer's problem will demand prompt information and advice. On other occasions, more patient work of organization and motivation may be required. An extension service must be able to respond to these different demands. So, आज के लेक्चर में हमने एलिमेंट्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन को डिस्कस किया, जिनमें इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए एक एक्सटेंशन एजुकेटर्स को एक एक्सटेंशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।